हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ ऐश्वर्या। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ट्रेडिशनल फेस्टिव मेकअप ट्यूटोरियल। अगर आपको जानना है कि मैंने ये लुक कैसे अचीव किया, प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखें। मेकअप स्टार्ट करने से पहले आई एम गोइंग टू मॉइस्चराइज माई स्किन, और मॉइस्चराइज करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस एवॉन का मिरेकल ग्लो फेशियल सीरम। इसका जो कवर होता है वो निकल गया है, बट एनीवेज अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आप किसी भी तरह का मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो जो आपके स्किन को सूट हो। तो मैं अभी लगाने वाली हूँ इसको अपने स्किन के ऊपर। Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for. And in case अगर आपको मेरी स्किन वियर्ड लग रही होगी, दैट इज बिकॉज मुझे 3 दिन से रात में नींद नहीं हो रही है, बिकॉज एडिटिंग के कारण आई एम स्लीपिंग वेरी 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 लेट, सो दैट इज व्हाई माई स्किन लुक्स लाइक रियली टायर्ड। सो डू नॉट माइंड, आई एम गोना फिक्स दैट। सो अभी मैं लगाने वाली हूँ प्राइमर, और प्राइमर के लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर। दिस इज लाइक रियली अफोर्डेबल एंड रियली गुड फॉर ऑयली स्किन पीपल। आई एम गोइंग टू टेक अ लिटिल ऑफ दिस ऑन टू माई हैंड, फिर लगाने वाली हूँ इसे अपने स्किन के ऊपर। प्राइमर को मैं अपने स्किन के ऊपर थोड़ी देर तक रहने दूंगी, देन आई विल मूव ऑन विद माय फाउंडेशन। प्राइमर लगाकर मुझे 5 मिनट हो चुका है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन विद माय फाउंडेशन। आई एम गोइंग टू यूज दिस वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन, एंड आई एम इन द शेड गोल्डन बीज। I don't like to apply foundation on my neck, so I'm not gonna apply there. Now I'm going to contour my face, और contouring के लिए I'm going to use this Beige concealer stick, and this is in the shade Toast. I'm going to hide my double chin first. I have gained my weight, like, anyways. Always falling for the wrong guys. They keep telling me it's alright. How could I be so blind? Searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright, they look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? अभी मैं करने वाली हूँ क्रीम हाईलाइट, और इसके लिए आई एम यूजिंग दिस मिस क्लियर का फुल कवरेज कंसीलर इन द शेड फेयर। सो या, दिस प्रोबेबली गोना बी द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस कंसीलर। लेट्स सी हाउ इट गोज। दिस इज वेरी क्रीमी। Take you there. This concealer is like amazing. I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy. अभी इस कंसीलर को करने वाली हूँ मैं सेट यूजिंग दिस ब्लू हेवन ट्रांसलूसेंट पाउडर। Moving on with the eyes, I am going to use this Swiss Beauty का palette, and this is in the number 6. इसमें से मैं लेने वाली हूँ सबसे lighter shade पहले, and I'm going to apply it on my crease. So yeah, let's do that.
Damn, this is super pigmented. Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this. Going to take this shade और मैं लगाने वाली हूँ थोड़ा सा अपने outer corner पे. This was forever. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? You're all I need. अपने इनर कॉर्नर में मैं लगाने वाली हूँ थोड़ा सा ये हाइलाइटर. दिस इज Maybelline का मास्टर क्रोम हाइलाइटर. और थोड़ा आईब्रो के नीचे. अभी मैं लगाने वाली हूँ काजल, और काजल के लिए आई एम यूजिंग दिस लैक्मे का काजल. Always falling for the wrong guys. They keep telling me it's alright. अभी मैं लेने वाली हूँ ये सेम शेड और इसे मैं थोड़ा स्मच करने वाली हूँ. How could I be so blind? I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy थोड़ा और काजल लगा रही हूँ इसे थोड़ा डार्कर दिखाने के लिए. so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Take you there. Now I'm going to do my favorite part, which is highlighting my face. Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like. मैं सारे लैशेस को ऑफ कैमरा जाके लगाऊंगी. Then I'll be right back. Okay, so this is how I look after wearing eyelashes. Actually, eyelashes कैमरा के सामने लगाने नहीं आती है, so I didn't do that. And these lashes are from Shein. I'll leave the link of this eyelashes in the description box below, so you can check it out from there. I'm going to apply a little bit of mascara on my lower lashes. For that, I'm going to use Maybelline का the hypercurl volume express mascara. Like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? ओके सो ये हो गया मस्कारा लगाना. अभी मैं लगाने वाली हूँ लिप लाइनर. ये एग्जैक्ट सेम कलर का लिपस्टिक मेरे पास नहीं है, सो आई एम गोना यूज दिस MN का लिप लाइनर. You're all I need. Can I take you there? Can I take you there? इस लिप लाइनर का नंबर है 071. इसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ ब्लू हेवन का ये लिप कलर. नंबर है LC01. Can I take you there? Can I take you there? Can I take you there? माई मेकअप इज लाइक ऑलमोस्ट ओवर. अब इसे सेट करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस ग्लैम 21 का मेकअप फिक्सर. सो या छोटा सा एक बिंदी. Can I take you there? Well, that's it for this video. I really hope that you enjoyed watching my video. If you did, please make sure that you like this video, and also make sure to subscribe to my channel if you haven't already yet. It will literally mean a lot to me. So I'll see you in my another video. Till then, bye bye, take care.